Today we are going to continue our that loads and load path workshop part 2. So last time we have taken in the last month part 1 where we studied how to calculate the gravity loads or dead loads of the materials or members, we can say. And we have seen what is meant by, let's say, one-way slab or two-way slab. I think depending on the Ly by Lx ratio, we can get that one-way, two-way actions. Okay. So today's agenda is that we are going to take one small example, practical example, which is almost ground parking plus 1, 2, 3, 4-story building. Okay, and we have a layout. I'll just show you the layout. So see, many times as a structural engineer, we need to design and analyze the projects which are having some parking. Then flats are there, 1 BHK, 2 BHK, like that. So in that, you know that living room, kitchen, bedroom, toilets, lift, staircase. So all such kind of rooms are there in the building or residential tower. And there are floors, parking floor, then first floor, third floor, second floor, fourth floor, like that. Sometimes they are odd, sometimes even floors are same. So first floor, you can see there is no balcony over here. And at second floor, fourth floor, there is a balcony. So such kind of odd even arrangement is there in the practical projects. Okay, can you see my screen? Yes, sir. Okay. So we have typical floors, odd floors, even floors, parking and terrace floors. So such kind of arrangement is there in any say buildings, residential buildings. And as a structural engineer, we should know what are the approximate loads coming on the columns and what is the load path. So what loads are coming and how they are transferred. So generally, you know that the load is transferred from slab to the beams, beams to the columns, columns to the footing. So this is the general load path we know. And we analyze such structures in STAAD PRO or ETABS. So once we have this, all of you know that on the basis of these architectural drawings. So these are the architectural drawings where all the room sizes are given. And what we do in the architectural drawings, we put the columns, beams like this. You can see there are beams B1, then slabs are there, one-way, two-way slabs. So all these kind of slabs we mark, we give the beam numbers, we put the beams, we put the lift wall or shear walls, columns, everything. So all members are there, and then we give the dimensions to the span of the beams and slabs. And once we prepare this general arrangement, we call it as a structural framing, where there are slabs, beams, and columns and shear walls. Okay. So this is structural layout. So previously I have shown you this is the architectural layout, and this is your structural layout. So how to prepare structural layout, we are not going in this session. Our today's agenda is we will see how is the load, how to draw the loading diagrams, and how to calculate the column loads. So that is our intention mainly, and that too for gravity loads. So generally people are having questions how to calculate the loads manually. And the reason of calculation is, manual calculation is, we can get the overall understanding about how much load is coming on the columns or beams. So that will give you a general judgment. See, generally we do this analysis in the STAAD PRO or ETAB only. So software will do the detailed calculation and analysis. But we cannot do the detailed calculation as a human being because it takes a lot of time. Then why we are doing this? To check approximately. So our intention is to calculate the approximate loads and load path. We are not here to discuss the detailed calculations. We try to understand the meaning of detail and approximate. Why approximate? So that we can get the answer quickly. So there are two things in the structural engineering. One is approximate. Approximate with respect to mathematical calculation. One is the detail. Okay, detailed. I'm not saying exact, but detailed, I would say. So approximate, as an engineer can do approximate calculations, and he must do that. And detailed calculation software will do, software or calculators. Okay, mainly softwares.
Then if we are using the softwares for detailed calculation, then why to do approximate? Can anybody tell me why to use approximate methods? So to find out the instant loading Because Yes. and sometimes to Yeah, please. input, because sometimes if we give the wrong input, we didn't know because software is automation. Yes, yes, yes. So software actually works on input, and whatever input you give, it will give you the output. So simple method is if you give the input wrong, output is also wrong. Okay. If your input is right or correct, then your output is also correct. So that means we don't know whether our input is correct. So we should know the input is right, and also we should know the approximate output. So we should know the input correctly and we should know the output also. Even though it is not correct, at least judgment. So generally for output, we should have a judgment. See, I'm using the word judgment. Judgment is always approximate. Okay. It cannot be exact because we cannot calculate exactly. So to have better judgment, or let's say to have the judgment, output judgment, let's say, what results or output is coming, is it acceptable? Okay, so does the software giving the right results? Or we can say to check the software results. Okay. And second thing is you should have an engineering feel. That's what numbers are coming. Engineering feeling. So this is very important. Engineering feeling means this will give you the confidence about your numbers, about your design, analysis, whatever. So the confidence comes through the engineering feeling and judgment. Okay. So these words are very much important, and that you can develop only through approximate method, not detailed. Approximate methods only will help you to develop the confidence, judgment. And why approximate? The main reason is for us, it is very quick. I can get the answer quickly. As it is very quick, definitely it will be approximate. So that is the reason we should do this. So our today's session is also on that basis. So our left side is important. See, right side will do the software. So no worries about it. Those who are in our training course, they may be knowing how to use the software and all. But only software will not be sufficient. You should develop your judgment. So these are our today's agenda. And today's calculations, we can have approximate and round figures also. So we will see. Now let's say we are having such kind of project with us, and we have developed one, see this general layout. I'll show you. Let's say these are the, first let me show you the section. So this is parking, then first floor, second floor, third floor, fourth floor, fifth, and terrace. So let's say there are only 1, 2, 3, 4, 5, 6 slabs are there actually in this structure. Let's say 3 meter is the floor to floor height. And we are having, this is the parking layout. So all of you know that in parking, we don't have slabs. Generally, this is a feeling actually, Murum feeling. So we have only tie beams or plinth beams at parking level, which are connected to the columns and walls. And second is, you can see here, there is a first, third, and fifth floor. This is odd floor. You know that this is a living room, kitchen, bedroom, and toilet. And there are beams B1, 2, 3, 4 like that. So beam numbering is given, and slab span is also shown, 1-way, 2-way slabs. And columns are also mentioned here. Some are horizontal, vertical. So we will not go in that. But there are columns, 1, 2, 3, almost 16 columns are there in this structure. Shear walls are there. So generally we do this general arrangement drawing on the architectural layout so that your structure will have a safe load path. So why we are preparing beams? Why we give beams to the structure? To transfer the slab load on the beams or wall loads on the beams. So the beam carries the slab load, beam carries the wall loads. And finally, the beam will transfer the load on the column. So this is the general load path. Let me just again mention this. Last time we have seen the generally slab to beam and beam to column and column to footing. This is the load path. Okay.
and even wall to beams, or it may be wall to beam and then beam to column, column to footing, and footing to soil or strata. So this is the load path. If you get such kind of projects, then how can you start? Okay. So if you consider the, let's say, parking layout. So parking layout, what are the members, beams, columns, and walls? Can anybody tell me what loads are coming on the parking? Parking floor में कौन-कौन से loads है that are coming on the structure, on that parking floor, let's say? What loads are coming there? So we can have a discussion also. So Only beam load. Sir, as there is no slab, so wall load on the beam. yeah, so in And generally we don't have walls. Generally, I'm saying. So let's consider there are no walls on the parking. okay. Then sir, dead load only, dead load of the beams. Yes, so Self-weight. there will And be only dead load of beams and columns and walls. Okay, yes, sir, staircase and all. staircase and all. Okay, so these are the loads coming on this structure. And if you see the first floor, let's say, on the first floor, what loads are coming? Brick load. The live load, Base load, floor load. live load plus dead load Yes, of so on slab, what loads are slab. there? Walls. Dead and live and finish. So we have slab self weight, we have finish load, floor finish, we have live load. Okay, on slab. So any slab, generally these are the loads: floor finish, self weight, and live. So all slab will have such kind of loading. On beams, what loads are coming? Sir, wall load and It the will load of slab. wall load, then And the self weight loads of the beams, self weight of the then beams. slab load will transfer. Okay, slab load. And finally, the beam will transfer all these loads to the columns. So this is the general load path, all of you know. So if we want to start any project, let's say like this. So let me consider the parking floor. So here what we are saying, load is from going from beam. Now there is no slab. So beam to column. Okay. This is the load path in this case. Now we have seen that the loads coming on the beam are only self weight. In this case, there is only self weight of the beams. So how to calculate the self weight of beams? Okay. So let me show you. कैसे निकालेंगे पता है क्या? Self weight of beam कैसे निकालना है? So Yes, sir. so self weight of beam. So generally we call the dead loads. Section area. So dead load of beam, or let's say beam self weight. So we are doing this exercise. We need to assume the size of the beam. Let's say we are having size of the beam as 0.23, or let me consider. Okay, 0.23 later. 0.23 into let's say 5 is my size, width and depth. We need to assume. So how to calculate that? Multiply. Volume into density. What is the density of concrete? 25. So the load is coming out to be, कितना आएगा ये load? So let me round it. It is coming 2.87. Let's say 3 kilonewton per meter. I'm rounding it for calculation purpose. It is coming 2.87 something. Okay. So dead load or self weight of the beam is 3 kilonewton per meter. Right. Now there is one more load, which is column load. So column load, let's say your column size is. So column load, you can take total column load. Okay. So say column width is 0.23
by 0.6, let's say depth BD. And while calculation of the column loads, we even multiply the height because it is purely kilonewton load. Okay, 3 meters into 25 kilonewton per meter. How much is this number? 10.35. 10.35. 10.35. Huh? Yes, sir. 10.35. So let me deliberately I'm taking round number. Okay, little lower, it's okay. Total is 10 kilonewton. Okay. As the number is very near to 10, I'm just taking 10 kilonewton. This is the total load of the column. Let's say all columns are having this size beams. Now, how is the load path? What we are saying? Beam load will go to the columns. Yes. Yes, sir. So generally, while calculation, manual calculation, what we do, we draw the loading diagrams. Okay. So our first aim is to draw the loading diagrams. So if you see the beams are there, B1, B2, shear wall, B4, B5, and they are resting on the columns. So how to draw the loading diagrams, we will see that. Okay. So let's draw the loading diagram of B1. ये ऐसे B1 है. I'm deliberately taking simply supported. Okay. ये मेरा B1 है. So 1, 2, 4, 5 ना. Let's say B1 is like this. B2. B1 and say B2. The two beams are there. And this is your support. This is your support. This is, I'm splitting that. All beams are, I'm splitting. This is your B1 beam. This is your B2 beam. There is a load on the beam. And what are the supports for B1? B1 किस पे support हो रहा है? C1 और C2 पे. Okay. See this. These are the load diagrams. C1, C2. B2 किस पे support हो रहा है? C2 and shear wall. Are you with me? C2 and shear wall. Right. So this is your loading diagram. Clear to all of you? Yes, sir. Yes, sir. Now what loads are coming on this beam? B1 पे कितना load है? Three kilonewton per meter. kilonewton per meter. Okay, 3 kilonewton per meter. ये B2 पे भी same है because सभी का self weight 3 kilonewton per meter and the span of B1 is कितना ही है 5.095. Let's say 5 meter. Huh? I'm just rounding the numbers for simplicity. 5 meters. And what is the span of B2? 3.2 meters. Okay. 3.2 meters. Now tell me what load is coming on the column. कितना reaction आएगा column पे? WL by 2. WL by 2. So the load on the column will be, let me write here, 3 into 5 by 2. So how much the load coming on C1? 7.5. 7.5. 7.5. C2 also same, yes or no? 7.5 kilonewton. Yes, sir. अभी ये C2 पे B2 से कितना लोड आएगा? 3 into 3.2 divided by 2. So this much 4.8. Approx. Yes. 4.8. Yes, sir. So let me say it as a 5 kilonewton. See, I'm round कर रहा हूँ मैं for simplicity of the calculation future. Okay. तो ये 5 kilonewton, ये भी 5 kilonewton बोलता हूँ. You can get this number, but we are doing approximately. So let's have little higher numbers. Doesn't matter. Okay. So this is your loading diagram for B1, B2. And B4, B5, they are same. Actually, you see the span. So we will not do the right side. Left side is important for us. Similarly, B6 and B7. Okay. 6, 7. Quickly, I will draw that. So once you understand the concept, then it is very easy. ये है मेरा B6, ये है मेरा B7,
and there is a load on that. So B6 or B7, C5, 6, 7. Okay, C5, 6, 7. C5, C6, C6 or C7. Now tell me what load is coming on C5. तो B6 और B7 पे, और यहाँ एक बीम बाकी है, ये है B8 यहाँ. C7 पे जा रहा है और C8 पे जा रहा है, राइट? नाउ सिक्स और 7 और 8 सभी का लोड एक ही है ना? ओनली यहाँ स्टेयरकेस का लोड आने वाला है. यहाँ अभी तक स्टार्ट हुआ नहीं है स्टेयरकेस विल स्टार्ट फ्रॉम दिस साइड. ओके, सो वी विल नॉट एनालाइज फॉर द टाइम बीइंग. 8 को बाद में करेंगे. 6 और 7 का बताओ कितना आएगा लोड? लोड तो ये सेम ही है, सेम आएगा सर. सो सेम आएगा. Sir- सो ये will be 7.5. So transverse beam is also connected with C6. Yeah, C5. we will see that. Okay, ये 7.5, ये 7.5, ये 5, ये 5 और ये देखेंगे बाद में. Okay, so these are the loads. 6, 7 हुआ, then 11, 12 भी सेम रहेगा सर. 1 और 2 की तरह ही रहेगा. So I will just oblique this 11, 12. यहाँ B11 लिखता हूँ, यहाँ B12 लिखता हूँ. Okay, so मतलब 1, 6, 11 they are giving same loads. Okay, ओनली यहाँ 11 को प्रॉब्लम क्या है, ये ऐसे लिखना थोड़ा डिफिकल्ट जाएगा, कॉलम के नंबर्स के लिए प्रॉब्लम हो जाएगा. सो लेट्स ड्रॉ इट अगेन, नो प्रॉब्लम, थोड़ा रिपीट काम होगा. इट्स ओके. तो ये है, ये एक लोड है, दिस इज वन लोड, देयर इज वन मोर. बी 11, 12, 13. ओके, 11, 12, 13. Same 7.5, 5. Okay, but you should write the numbers. Column numbers क्या है मेरे? 11, 12, 13, 14. So 11, 12, C12, C12, C13, C14. 13 होगा ना सर? नहीं, just a moment. C12 ये 13 होगा और ये 14. ओके, क्लियर? लोड समझ में आ रही है? नाउ वी विल सी दिस डायरेक्शन 16, 17. सो 16, 17 का लोडिंग डायग्राम भी निकालेंगे. B16, B17. So it will be something like this. So once you understand, we will quickly do that. ये एक बीम है, ये एक बीम. Then there is one more beam, ये वाला. (16, 17, 18, 19). Column numbers 11, 5, 1. 11, 5, 1. C11, 5, C1. This is first case. Then ये इसके लिए क्या है? 18, 19 के 12, 6, 2. 12, 6, 2. Okay. So C12. Loads. Now you should know the 16 का span कितना है. So 16 का span है. How much is the span for 16? 4.2, 4.3. Okay. So 4.3 meters. ये लोड आपको पता है. बीम का सेल्फ वेट is same 3 kilonewton per meter. So this number will come out to be how much? 4.3 into 3 by 2. कितना आएगा ये? 6.45. हाँ, 6.45. Yes sir. Let's say 7 kilonewton. Okay, ये 7 kilonewton आएगा. And even B17 का भी same ही span. Okay, just see 4.29 like this. 4.3 से multiply करके मतलब वही आएगा यहाँ भी.
7 kilonewton. See, I'm taking round numbers. Don't look at the digits. Understand the process. Now, if I ask you how much load is coming on column 1, okay? So look at the plan. The beam B1 is transferring half load on the C1. Then B17 is transferring half load on the C1, and there is a self weight of the column. समझ में आ रहा है सभी को? Yes, sir. So there is, let's say, this this half load from B1, this half load from B17, and its self weight. Don't forget its self weight also. So there is a self weight also for this column. Now, if I ask you to calculate the load on column C1 from parking level only, from parking level. So I can calculate, put the loads like this. I can prepare small table. समझो यहाँ है column numbers. C1 अभी क्या करता हूँ मैं? C1 1 2 SW 5 6 7. Okay. Eleven, 12, 13. अभी लेफ्ट साइड ही ले रहा हूँ मैं. ये राइट साइड मैंने लिया नहीं, मैं स्लैब में लेता हूँ ये स्टेयरकेस का. ओके. सो C1 पे लोड कितना आ रहा है? फर्स्ट तो सेल्फ वेट ऑफ द कॉलम 10 है ना, और यहां देखो अभी C1 कहाँ है. C1 इज हियर. सी B1 से आ रहा है 7.5 और कौन सा था? 17 से. 17 से. B16 17 है यहाँ. 17. ये 17 है आपका बीम. जी. So this B17 is giving the load on C1. यहाँ देखो ये C1 लिखा है ना हमने. So ये 7, ये 7.5 और सेल्फ वेट. So 7.5 plus 7 plus 10. 10 है सेल्फ वेट. 7 कहां से आ रहा था? B17 से, और ये B1 से आ रहा है. टोटल कितना आएगा लोड? 24.5. 24.5. अभी इसको भी थोड़ा सा करता हूँ राउंड. 25 किलोमीटर. ओके. सो दिस इज द लोड कमिंग फ्रॉम द पार्किंग फ्लोर. सिमिलरली C2 के लिए देखो, 1 2 3 करेंगे, बाद में फ्लोर पे जाएंगे हम. तो C2 पे और एक क्या आएगा? C2 पे B19, B2. ये एक है, ये ब्लू कलर का ये है B1 का, देन बाद में ये B2 का और B19. ओके. सो दिस मच लोड इज कमिंग ऑन C2. सो लेट्स से 1 2 और 19 बीम में दिखेगा. 1 2 ये एक है, ये 2 भी है यहाँ भी. ये देखो ये 2 से ये 1, और क्या था? 19 पे देखना पड़ेगा. 19 इज समवेयर यहाँ. ओके. ये 2. तो मैं लिखता हूँ सभी लोड्स. सो फर्स्ट ये है 7.5, ये है 5. ओके. 7.5 5, 7.5 plus 5 plus 7. ओके. ये वाला plus 10. So this number comes out to be 29.5. So let's say 30 kilonewton. Okay. See, purposely I am taking the round numbers. The importance of the round number is that you can connect to this number. See, it is very easy to understand 25, 30, 35, 50, 100, 200. That is the reason I'm just not taking 24.5, because you cannot remember such kind of numbers and they don't connect with you. So whenever you do any approximate or quick methods, try to develop the round numbers that will connect with you. See, we are finally not designing the structure using approximate methods. Software will do that.
We are only going to check it and just have a judgment and just have the feeling of the numbers. Okay, so this is your load coming on this. So C1 or 2 मैंने निकाला है. Fine. Now what we will do, similarly we can do for other beams and columns. Just sum this, draw the loading diagrams, and जहाँ पे column number से वो add करते जाओ सभी loads. And you can look in the plan. C2 पे ये B1 का load है, 2 का है, 19 का है. Now if I ask you what is the load coming on C6, तो C6 पे क्या आएगा? You can just see 6 पे ये आएगा half from the B6, B6, B18, B7. ये half, ये 7 का half और ये 18 का half and self weight. Okay, so चारों जगह से आ रहा है load. So once you draw the loading diagram, हमने निकाला है already, 6, 7 का है हमारे पास, 18, 19 का भी है. So you can do that. C6 मतलब 4 जगह रहेगा. At 4 places 6 रहेगा. तो 6, 7 पे ये देखो, यहाँ एक, यहाँ ये है, ये 6, 6 है. और कौन से नंबर में रहेगा? 18, 19 में रहेगा. So यहाँ एक है C6, यहाँ एक. Okay, 4. So you need to sum that plus self weight. So that is the overall idea about this load path for parking. 36.5. Yeah. We will put these numbers as we go ahead. First, try to understand the loading concepts. Now let's see the first floor, third floor. Okay. So this is your floor plan. Now, in floor plans, the important point is slabs. Okay, slabs both important is. Load path is same, slab to beam, beam to columns and footing, right? So first, what loads we want to understand? अभी parking में सिर्फ हमने beam का load निकाला था और column का, right? Now in this, we should first calculate the loads of the slabs. बाद में walls भी है हमारे पास. So slab का load निकालना होगा. तो now tell me what loads are on the structure: slab loads, wall loads, and beam loads, and column loads. Okay, there are 4 loads. So and lie loads also. So we will calculate the dead load of the slab. Slab का dead load कैसे निकालते बताओ? Tell me how to calculate the slab dead load or slab self weight. Let me write here. There are loads on the slabs. कौन से रहेंगे? Self weight, floor finish, Live load. live load. Floor finish we generally call it as a superimposed dead load, SID वाला. ये use कर देता हूँ. So these are the 3 loads on the slabs, and then we will sum this and we will transfer on the beams. Then wall load भी निकालेंगे. First slab का निकालते हैं. चलो. Slab self weight, we should know the thickness of the slab. Let's assume thickness of the slab as 0.12 meter thickness. Into क्या करते हैं? 25 Density. density of rock. 25. So those who are not understanding this, please see my previous workshop, part 1. Okay. So this number comes out to be 3 kilonewton per square meter. It is a slab load. That's why it is coming per square meter. This is slab self weight. Now there is one more load, which is SIDL, floor finish. Floor finish कैसे निकालेंगे load बताओ? What is there in the floor finish? The floor finish thickness and the weight of the. Yes, so there is a screed below. See, do you know there is a slab here? RCC slab is here. This is your RCC slab. Then on that we provide the screed or mortar, and then there is a tile. So if you want to calculate, this is your floor finish, whatever I am saying. Slab का load तो already लिया है मैंने. ये 0.12 meter है ना ये. So this is your slab concrete weight. यहाँ निकाला मैंने 3 kilonewton per square. Screed. Generally, we take the screed as 50 mm. 50 mm is the screed, and tile you can take 10 mm, let's say, for example. Okay, 10 mm tile, 50 mm screed or mortar. So if I want to calculate the load, ये ऊपर वाला load चाहिए मुझे. कैसे निकालेंगे? So there will be 50 mm is nothing but 0.05 meter. Okay. Into density of screed, वो भी कंक्रीट की तरह ले सकते हैं आप. This is the
स्क्रीड वेट सेम स्लैब का जैसे निकाला वैसे निकाल रहा हूं. फ्लोर फिनिश टाइल में क्या है 0.01 थिकनेस मीटर्स में इनटू जनरली यू कैन टेक टाइल डेंसिटी एज 22-25 तक ले सकते हैं स्टोन डेंसिटी. ओके सो इट इज लेट्स से 22. These numbers are given in the IS 875. Okay. So this total number will come out to be 1.5 kilonewton per meter square. Round कर रहा हूं मैं थोड़ा सा. So floor finish कितना है मेरा 1.5 kilonewton per square meter. Now और क्या रहेगा इसमें? Live load 2 kilonewton per meter. So live load. Now generally live load for bedroom, kitchen, living or toilet. It is 2 kilonewton per square meter. Okay, as per IS 875. Okay, part 2, I think. Okay. So this is given here, and live load for staircase is 3 kilonewton per meter. Okay. So I will just show you, we generally prepare for practical project with design basis reports. Those who are in our training, you will understand that. Such kind of information we give that in that, and where you will see this. अभी ये जो है ना floor loads निकल रहे हैं. So this one floor finish. So 0.05 into 24 or 25 you can take. 0.01 into 22. So this is your floor finish load. Okay, and so these are, we will go there, and live load I will just show you. Live loads. हाँ. 875 part 2, living bed, kitchen, study room 2 kilonewton, balconies and store rooms or passages 3 kilonewton per square meter, staircase 3 kilonewton. Okay, so these are the live loads you will get in IS 875. So you should know different rooms, different live loads. So in this case, all of you know that toilet, bedroom, kitchen and living. So it will be 2 only. Staircase के लिए मेरा रहेगा 3 kilonewton per square meter. Live load I am just writing a live load, only live load. And all other rooms, even here also it is 3 kilonewton per square meter. Passage. And all other rooms 2 kilonewton per square meter live load. Try to understand. So all the plans. So this is the load. What else are there? So this is live load we have written. Now dead load में, now tell me ये 3 kilonewton per square meter dead load slab thickness कहाँ applicable है मेरा? S1, S3, S4. And now try to understand this toilet. There is one more peculiar part in the toilet. There is a sunk in the toilets. पता है सभी को sunk रहता है toilets में. So whatever plan you can see now, there is a sunk over here. S2, this is the sunk slab for toilet. If you see the section, you will see the section like this. So there is a slab below, then there is sunk. Generally, we fill the sunk using brick bat coba. Okay, so this portion we fill with brick bat. So if you want to calculate the weight of this zone, you need to multiply with brick density. अभी तो यहाँ क्या है? If you want to calculate the slab load of the sunk area, slab thickness ये है पता, हमने already calculate किया है. Okay, just show हम करता हूँ. So how to calculate the sunk loads? Slab self weight कितना है हमारा? ये ऑलरेडी निकाला मैंने 0.12 meters. 3 kilonewton per meter. या 3 किलोमीटर पर स्क्वायर मीटर है स्लैब का, तो ऑलरेडी निकाला है. संक लोड निकालना है मुझे, तो संक लोड विल बी ये 0.325 इंटू डेंसिटी क्या है? ये ब्रिक बैट है मेरा. डेंसिटी ब्रिक 20 ले लो राउंड. ओके, बाद में ये तो ऊपर वाला सेम ही है ना.
ये स्क्रीड और टाइल उसका कितना निकाला है हमने 1.5. 1.5 किलो न्यूटन पर स्क्वायर मीटर निकाला है ऑलरेडी. सो लेट मी से संक लोड ये मल्टीप्लाई करने के बाद और ये प्लस करने के बाद लेट से इट इज 8 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. ओके, संक लोड इज 8 किलो न्यूटन पर स्क्वायर मीटर. आई विल शो यू द details are written here. See all the unit weights, thickness, sunk load निकाला है करके राउंड फिगर 8 किलो न्यूटन पर स्क्वायर मीटर. सो संक लोड भी निकाला हमने. सो दीज आर ऑल SIDL, सुपर इम्पोज डेड लोड्स. डेड लोड वी कैन से एडिशनल डेड लोड. देन और कुछ लोड स्टेयरकेस. नाउ स्टेयरकेस इज पेंडिंग. नाउ हियर वी विल. सो स्टेयरकेस का लोड कैसे निकलते बताता हूं. See, so generally we have the staircase like this. What loads are coming on the staircase? A waste slab. Okay, there is a weight of the waste slab. Slab self weight. ये है ना. So इसका कंक्रीट का वेट निकालना पड़ेगा. So generally staircase are having more thickness. 200 250 ऐसे thickness रहता है due to more loads on the staircase. And there is additional load क्या है इस पे staircase पे बताओ. स्टेप कंक्रीट लोड हो गया Step of concrete. So these triangular steps are there. So this is the load coming. Additional concrete we can say. This yellow color is plain concrete. Thickness is 200, let's say assume. Then there is a staircase waste slab. Not waste slab. This is staircase steps load. And then what we have? Again same screed or tile. So three loads: waste slab, steps, screed, tile. Three loads are coming. So how to calculate that load? They are given here. So अभी फ्लोर फिनिश तो आपको पता है. ये स्क्रीड और टाइल का कितना है हमारा ऑलरेडी निकाला है 1.5 किलो न्यूटन पर स्क्वायर मीटर. सो दिस यू नो. वेस्ट स्लैब अभी यहाँ 200 का है ना. So waste slab say 200 mm thick. So 0.2 into 25 5 millimeter per meter. 5 kilometer per square meter, right? And now steps. Steps ka there is one formula actually. Can just directly you should know the rise of that. So steps ka R upon 2 into 25. R is nothing but rise of the steps. So if you have the rise as 0.16 divided by 2 into 25, 2.25. So ये जो rise है ना ये, let's say this is your 0.16 meters. So R by 2 into 25. 0.16 divided by 2. How much is this? 2 kilometer per meter square. Okay, 2 kilometer per square meter. So total staircase load, staircase dead load, okay, is 1.5 plus 5 plus 2, which is say 9 kilonewton per square meter. Okay. So whenever you do the calculation of staircase area, you will use this number. Final is this. When you use the slab, sunk slab load, you will use this number. So I'm not taking any, this is only dead load. Live load बाद में उसमें add कर देंगे. And for other slabs, ये S1, S3 वगैरह है ना ये. इसके लिए क्या number लेंगे हम? So let me summarize. Total dead load is equal to ये 3 plus ये floor finish. 4.5 kilonewton per square meter. So if I और एक लोड बाकी है जो है वॉल लोड.
वॉल लोड बताओ कैसे निकालेंगे? थिकनेस से 0.1 मीटर इज द थिकनेस ऑफ द वॉल इनटू हाइट, Height. thickness into height into density of the brick. So this number is 9 kilonewton per meter. 9 kN per So meter. this will go on beams. Okay, so ये wall load है मेरा. Yes. So I think all loads are calculated for this project, and we can summarize also the loads. Okay, so what I will do, ये मैं delete करता हूँ. डू यू रिमेम्बर द लाई लोड? यहाँ लाई लोड 3 है, मैं रेड में लाई लोड लिखता हूँ, और बाकी जहां नहीं लिखता वहां 2 है. ओके, ये 2. ओनली 3 लाई लोड इज फॉर पैसेज एंड staircase. Other lie loads are 2. Now let's write down the loads. टोटल लोड लिखेंगे हम, डेड लोड प्लस लाई लोड. ओके, तो हमें लिखना है डेड लोड प्लस लाई लोड. डायरेक्टली ये प्लान पे लिखने वाला हूं मैं. सो टेल मी S4 पे कौन कौन सा लोड है? टोटल लोड कितना S4 पे आएगा? डेड लोड कितना? हाँ, तो ये है 4.5. ओके, ये रिमेंबर दिस नंबर. दिस इज फॉर, लिखो क्या यहाँ, S1, S3, S4 एंड इतना ही. ओके, लिविंग, किचन एंड बेडरूम, दे आर हैविंग 4.5 प्लस लाई लोड इज 2. ये, so it will be 6.5. correct? kilonewton per meter square. ये 6.5 है, ये 6.5 है, ये 6.5 इंक्लूडिंग लाई लोड. so 6.5 मैं यहाँ लिखता हूँ, is nothing but 4.5 plus 2 लाई लोड. ये टोटल डेड लोड इंक्लूडिंग फ्लोर फिनिश एंड ये लाई लोड है. so 6.5 here also 6.5. सेम स्लैब है. S2 पे कितना आएगा बताओ? S2 इज संक स्लैब. तो संक स्लैब का लोड है हमारा डेड लोड. टोटल डेड लोड इसमें ये डालना पड़ेगा हमें, सेल्फ वेट निकाला नहीं ना हमने. सो टोटल डेड लोड इज सेल्फ वेट प्लस फिनिश. तो ये सेल्फ वेट हमारा 3 है, आपको पता है ये स्लैब का. 3 + 8, so it is 11. so this is your 11 number, this is also 11. and नहीं, 11 तो डेड लोड हुआ ना, सिर्फ प्लस लाई लोड आएगा ना. so DL plus LL is 11 + 2. ये टॉयलेट के लिए चल रहा है सर. 13 kilonewton per meter. 13. So, all of you are with me? कुछ डाउट्स रहेंगे तो पूछ सकते हैं. 13. What else? staircase इसका कितना लोड है? 3 लाई लोड है मेरा. 3 लाई लोड है, और ये कितना था मेरा? ये 9 है ना. 1.9. so लाई लोड, so stair डेड लोड प्लस लाई लोड इज इक्वल टू ये 9 डेड लोड प्लस 3 लाई लोड, 12 kilonewton. so it will be 12. यहाँ लिखता हूं मैं डायरेक्टली, यहाँ 12 kilonewton per square meter. अभी S5 को कितना आएगा बताओ? इससे सिर्फ एक नंबर ज्यादा, 7.5. करेक्ट, क्योंकि इसका 3 kilonewton लाइव लोड है. बाकी तो यही है ना, फ्लोर फिनिश है, उसमें टाइल है, स्क्रीड है, बाकी सब सेल्फ वेट सेम है. दैट इज द लोड्स. एंड व्हाट अदर लोड्स आर देयर? और कुछ है क्या मिसिंग इसमें? कॉलम का लोड तो आपको पता है 10 kilonewton है हमारा. सो फॉर ऑल कॉलम्स. शेयर वॉल का मैं अभी नहीं ले रहा हूँ, जस्ट यू कैन कैलकुलेट डेड वॉट थिकनेस इनटू हाइट निकाल के, एज पर कॉलम यू कैन डू द कैलकुलेशन ऑफ दैट. And then there are
wall loads. So let's assume that you are having wall loads on all the beams. ये सभी walls, यहाँ सब walls है समझो. You can refer the architectural drawing. See, all beams are having wall loads. So these are wall loads, and wall load calculation कितना है हमारा 9 kilonewton per meter. यहाँ भी है समझो. Okay. So these are the inputs which are required for drawing the loading diagrams. Abhi, the way we have done for parking floors, we will do it for these beams also. Okay. Abhi karenge B1. Now there is one point which you should know: how the slab transfers the load on the beams. Yes, slab का load transfer कैसे होता है? So for transferring the slab loads, we should know the Ly by Lx ratio. Ly by Lx, if it is less than 2, क्या बोलते हैं इसको? 2A. Two-way slab. 2-way. Yeah. And if it is this greater than 2, 1-way. Now let me. So Ly by Lx, now you have the dimension 3 meter and this is your 2.8, मतलब 3 meter. So tell me, ये 2-way है 1-way? Ly by Lx, you can calculate 3.12 divided by 2.89. So it will be 2-way, less than 2 आएगा ना ये. Now this will have a triangular and trapezoidal distribution. I'll just show you. Ly by Lx S1 का निकालेंगे S1. 3.12. Ly is longer span divided by 2.89. So it will be definitely less than 2. So 2-way. You can check it through calculations. And when there is a 2-way slab, the load transfers like this. Triangular load कहाँ जाएगा? B1 पे जाएगा या B21 पे? बताओ. Trapezoidal और triangular बोलते हैं ना हम. कहाँ जाएगा ये? So there is a triangular load. B1 पे जाएगा because it transfers on the shorter span. तो ये ऐसे कुछ तो रहेगा मेरा. Then there is a trapezoidal load. ऐसे. Okay. ये triangular है और ये है. So trapezoidal on B21 and 23 and triangular on B1 and 6. Right. So generally formula for triangular load is WLX by 3 and trapezoidal load is there is one formula for that, WLX by 2 bracket 1 minus 1 upon 3 beta square. Beta is nothing but L by upon Lx. Okay. So इस केस में क्या आएगा? You need to calculate Ly by Lx कितना आएगा? ये निकालना पड़ेगा. Shall I consider this as 1 roughly? कितना आएगा ये? Yes. 1.07 exact है. 1 करता हूं मैं. Assume करता हूं 1 less. So this beta is 1 in this case. So if this ratio is 1, then it will be almost equal to this value आएगा ये. Okay. So remember this formula. Now
देन S3 क्या होगा? ये है 3 + 1 4 2A आएगा मेरे ख्याल से. ओके, सो 3 4 4.3, लेट्स से 4.3 डिवाइड बाय 2.2, 4.3 कितना आ रहा है? ये 1 वे हो रहा है. 1.95, 1.95, 2A आ रहा है. Okay, so now on that basis we have drawn this, shown this 1-way and 2-way dimension. Okay, notations. So this is your 2-way and the triangular load be like this. मैं थोड़ा सा डिटेल दे रहा हूँ, इससे भी अप्रोक्सीमेट कर सकते हैं, बट लेट इट बी, ज्यादा भी अप्रोक्सीमेट स्टार्टिंग को नहीं करेंगे. So this is your triangular and trapezoidal here, and S4 भी same. ये ऐसे शॉर्टर स्पैन पे जाएगा ट्रायंगल, लॉन्गर स्पैन पे जाएगा ट्रेपेजॉइडल. राइट. ये है ट्रेपेजॉइडल. Now let's draw the loading diagram for B1 and B2 only. Okay, B1 B2 का loading diagram निकालेंगे. B1 B2 similar to that. Now there is, okay, करेंगे start वहां से करेंगे. B1 is something like this. बाद में है B2, B1 B2, if you look at the B1 diagram, can you see that B23 is here? यहाँ दिख रहा है B23. So B23 is transferring the load on B1. यहाँ कर रहा है ना transfer? Yes or no? Yes. B23 will transfer the point load on the B1. So I will just put this point here, point load as point load on B1. B1 पे एक point load भी निकलता हूँ मैं ऐसे. यहाँ कहाँ तो है point load. That distance also we can mention. So this point load is coming from B23. So let me write down the B23 here. So this point load is from B23. Then B1 Y. Yeah. Dimensions are, ये है 2.89, मैं इसको 2.9 बोलता हूँ. B12 कोई है क्या और नहीं है? Now tell me, B1 पे लोड क्या जा रहा है? From S1 triangular. Yes. Yes, sir. From S1 it is going, and then from S3 also triangular जा रहा है. अभी if you ask me which load will be more, S1 का ज्यादा रहेगा या S3 का रहेगा, बताओ इस बीम पे. S1 का ज्यादा रहेगा. तो अभी क्या करेंगे, we will approximately take S1 का लोड पूरा डाल देंगे बीम पे. Okay, such kind of approximation is okay whenever we do approximate analysis, क्योंकि ज्यादा फर्क नहीं होने वाला. So S1 का ट्रायंगुलर लोड पूरा उस पे डाल देंगे बीम पे, B1 पे. Okay, so this will be, yellow color will be only S1 load, that will take care of S3 automatically. तो S1 का लोड के, so okay, let me write here, B1 पे कौन कौन सा लोड है? B1 पे है, on B1 there are loads of self weight of B1, then dead load, or sorry, slab load S1. और क्या लोड है इस पे? B1 पे कौन कौन से लोड से? Wall load. Wall load. वॉल्स. S1 का लोड
then self weight B1 का और wall load. Okay, so there are 3 loads on that. So self weight of beam निकाला था हमने, कितना निकाला था पार्किंग के लेवल पे? 3 था क्या? Just a moment. Beam self weight 3 है. Okay. So beam self weight is 3 kilonewton per meter. यहाँ beam लिख दो. These are the loads. S1 का लोड बताओ. फॉर्मूला क्या रहेगा ट्रायंगुलर का? WLX by 3. So W कितना है? S1 के लिए W कितना है? हमने निकाला है ना already? 6.5. देखेंगे प्लान पे जाके. 6.5, right? 6.5 already calculated. 6.5 into 6.5. LX मतलब स्लैब का ये स्पैन. LX is the shorter span of the slab. कितना है मेरा S1 का shorter span? ये कितना है? 2.89, 2.9 बोलता हूँ. चलो 2.9 is my this span. So LX is 2.9. So 2.9 divided by 3. So this number is, ये अभी 3 करेंगे एक. Okay, 6.5 करता हूँ मैं. राउंड कर रहा हूँ नंबर्स. Don't Sir, divided by 2 check आएगा. the numbers. Divided by 3 है ना ये. WLX by 3. This is your LX, this is your load divided by 3. So ये 2.9 मतलब 3 के आसपास लिया मैंने. Okay. So 6.5 from the slab S1 and wall load 9 kilonewton per meter. So total कितना आया इसके ऊपर? 3 plus 6.5 plus 9. 15.5. 18.5. 16.5. Total load. Sir, 6.5 is the total load. 18.5. 18. ये है ना, ये 3, ये this plus this तीनों का समेशन आएगा ना बीम पे. Yes, sir. 18. राउंड फिगर ले रहा हूँ फिर से, बाद में मुझे ये थोड़ा आसान जाएगा कैलकुलेशन. Okay, so this is the 18 kilonewton. Yes. Slab S1 triangular load base into height divided by 2 ना, 1/2 base into height. नहीं बेस इनटू हाइट कहाँ से है? WLX by 3 फॉर्मूला है ना ये. Triangular. सो हमारा W कितना है अभी इसमें? 6.5 है. LX मतलब स्पैन, शॉर्टर स्पैन ऑफ द स्लैब, और 3 ये लगभग मैंने 6.5 लिया है. करेक्ट? Actually, the doubt is the area of triangle is half of base into height. No, that is not the way. Don't geometrical calculation मत करो. ये equivalent loads है. These are the equivalent loads derived from the yield line theory. Okay. Okay. So don't geometrically don't do this. Use this formula directly. Sir, These are ये conservative slab का- formulas. सर ट्रायंगुलर एरिया का कंप्लीट लोड है या फिर पर मीटर लोड है? Per meter. See, we are converting the triangular load into equivalent UDL. ये UDL है ना मेरा. ओके सर. मैंने ऐसे लोड नहीं डाला ना, ऐसे ड्राइंग किया क्या मैंने? नहीं ना. Have I drawn like this? Triangle? नहीं ना. The load is triangular. This is the equivalent triangular load. मतलब ट्रायंगल को मैंने रेक्टेंगल किया कन्वर्ट. हाँ सर, UDL यही करके. इसी में ही कंफ्यूजन हो रहा था. ठीक हाँ, है. इसलिए वो हो रहा है वैसे. So this triangular load converted into UDL is nothing but this WLX by 3. Okay. So don't look at the geometrical dimensions. Just follow the formula because it is through the yield line theory given in the books. Okay. So 18 kilonewton per meter will be the load. अभी B2 पे बताओ क्या आएगा? The same. हाँ, सिर्फ हमारा ये चेंज होने वाला है. Now see why I am 3.2. giving you. हाँ, ये 3.2 है ना, ये यस से सर. थोड़ा ज्यादा आएगा ना. हमने वो 2.9 या 3 के लिए लिया था. तो Yeah. the only change will be, now दिखाता हूँ मैं. See, बाद में once you understand the concept, everything is easy. Now there is no point load here. So self weight 3, ये
सेम है। स्लैब एस क्या है वो 4, पॉइंट तो WLX/3 मतलब 6.5 इंटू LX इज 3.2 डिवाइडेड बाय 3। ये थोड़ा ज्यादा लेंगे हम, मे बी 6.93 राउंड ऑफ 7 हो जाएगा सर। 7 आ जाएगा। ओके, थोड़ा हाई आ जाएगा। सो यू नो दैट इससे थोड़ा ज्यादा आना चाहिए। 6 पॉइंट ये रहेगा तो 7 या वॉट एवर। ओके, दिस इज एंड वॉल लोड इज सेम, सो नो प्रॉब्लम। वॉल लोड इज 9, so total will be total W sigma 90. 19 kilonewton per meter. Okay, fine. So once you know this, अभी 23 का कितना पॉइंट लोड आने वाला है पता नहीं है, वो 23 सॉल्व करने के बाद समझ में आएगा। ओके, so this is the loading diagram. This is question mark for me now. Now. B20 21 ये लेता हूं मैं पहले। See, my intention is कॉलम C1 का लोड आना चाहिए मुझे अभी। So 21 and 21 कैसे है? पॉइंट लोड है ये 13 से और ये 6 से। B13 कुछ तो नंबर आएंगे। नाउ अरे बाल्टी भर दे उधर ले अब जाके। इसमें बताओ पानी आया S1 का जो लोड है, S1 का, S1 is 1 way or 2 way? So Sir, 2 way. 3 meter by this to, no, it is 1 way। 1 way आएगा ना, ये 3 by 1 है। S2, sorry. Yes, S2 to 1 way. या तो ये 1 way है। So you know that 1 way is the half load, ये B6 पे जाएगा। So will there be any load from S2 on B21? B21 पे जाएगा लोड कुछ? No. ये अभी ये मेरा स्पैन है ना ऐसे, तो B21 पे नहीं जा रहा। तो B21 पे कौन सा लोड जा रहा है? S1. S1 करके S1 का जा रहा है। यहाँ से भी ये 20 पे S1 से, या तो S1 पे कौन सा है? ट्रेपेजॉइडल लोड है ना। यस सर। यस सर। So it is trapezoidal load. So we will calculate the trapezoidal load on that. So कैसे करेंगे? S1 का 6.5 तो आपको पता है। So मैं यहाँ साइड में निकलता हूँ। S1 trapezoidal फॉर्मूला, इसलिए मैं यहाँ साइड से निकलता हूँ। So ये what is the formula? WLX/2 into 1 minus 1 upon 3 beta square. Okay, बीटा कितना है? LY/LX निकाल देखना पड़ेगा। LY फॉर ये 3.1 डिवाइडेड बाय 2.9। अभी वो सेम ही आ रहा है, 1.07 मतलब लगभग 1 ये, तो देखेंगे क्या आ रहा है। सॉरी, यहाँ निकलना है ये। लेट मी अज्यूम दिस वन ना, तो ये कितना आएगा नंबर? W is 6.5, LX is how much? 2.9 शॉर्टर स्पैन डिवाइडेड बाय 2, 1 minus 1 upon 3 बीटा स्क्वायर मतलब 1 आएगा। यहाँ क्या आएगा नंबर? ये लगभग Sir, 6. Approx 6.5. हाँ सर 6.5 आएगा, करेक्ट। क्योंकि ये व्हेन द रेशियो इज 1 द नंबर इज WLX/3 ओनली। ये बाद में WLX/, so it is 6.5 kilonewton per meter square. Okay, so again I will write here something. यहाँ है मेरा सेल्फ वेट, बाद में S1 से लोड आएगा यहाँ और वॉल लोड आएगा। सेल्फ वेट इज 3, S1 से ये 6.5,
और ये वॉल का 9, सो अभी वही आ रहा है मेरे ख्याल से इस पे भी, राइट? कितना था वो? 18, सही है ना? 18.5. अभी सी एक्चुअली स्पीकिंग, now see how we do the approximations. If you see here, ये S2 का ये जो जोन है ना बीम का, this zone there is no load from the slab, isn't it? Right. एक्चुअली लोड मेरा जा रहा है सिर्फ इतना स्लैब से, इतने जोन में लोड है, देखो, क्योंकि स्लैब S1 इतना ही जोन में है ना। दिस इज द ओनली लोड कमिंग ऑन द B21। यहां कुछ भी स्लैब का लोड नहीं है, सिर्फ सेल्फेट और वॉल का लोड है। बट एज द स्पैन इज वेरी स्मॉल, लेट्स एज्यूम ये सभी जा रहा है लोड, ओके, on the conservative approach, because we are doing approximate analysis, so don't worry about this. And even in STAAD PRO or ETABS also we take that load, or it will calculate automatically. So that's why I'm taking this full load. So where to do the shortcut, where not to, it is up to you. Finally we want to get the overall judgment about the loads. So ये 18 हुआ, similarly ये same span है, equal है, तो ये भी 18 आएगा। (2021) हुआ, now all 6 is creating problem, क्योंकि 6 का लोड किस पे जा रहा है? 6 का लोड यहां जा रहा है on B21 as a point load and on B23 also as a point load, okay? तो पहले B6 निकलते हैं अभी। Okay, so let me write down the supports also. C1, 2 shear wall. ये है मेरा C1, ये C2 shear wall। बाद में ये कौन सा था? B20 और 21 के लिए 20 stands on C11 and C5, C11 C5, ये C5 और क्या है? C1, okay. Now let's calculate B6। अभी B6 करेंगे, वो सिंपली सपोर्टेड है और उसका कोई इस पे डिपेंडेंसी नहीं है, वो इंडिपेंडेंट है। सो B6 करेंगे अभी। B6 का स्पैन पता चाहिए हमें, लोड है, there is only UDL, there is no point load on B6। now what are the loads coming on B6 बताओ? सर ट्रायंगुलर लोड आ रहा है S1 का और हाफ लोड इसका आएगा S2 का, राइट। सो S1 का ये लोड आ रहा है, सी दिस, देन हाफ फ्रॉम S2, ये ऐसे निकाल सकता हूं मैं ड्राइंग, S2 का हाफ, S1 का ट्रायंगल प्लस सेल्फेट प्लस वॉल लोड, ओके। सो S1 S2 निकलता हूं मैं साइड में। सो हाउ मच कमिंग फ्रॉम द S1? S1 से आ रहा है B6 पे, यस लाइन ड्रॉप, V1 में हमने कैलकुलेट किया था WLX/3 वाला फॉर्मूला, विच वाज कमिंग 6.5, ऐसे ही है ना वो, राइट सर। तो लेट मी राइट 6.5 किलोन्यूटन पर मीटर। बाद में S2 का लोड जो है WLX/2 आएगा अभी, हाँ वन वे है ना। व्हाट इज द W फॉर S2? S2 इज संक स्लैब, ये संक है। So 13 13 था ना, कहाँ निकला? लेट्स चेक इट अगेन। ये 9 प्लस नहीं, स्टेयर के सही है 13, हाँ ये वाला टॉयलेट का संक। 11 + 2 13 किलोन्यूटन पर स्क्वायर मीटर इज W। 13 into LX, LX मतलब क्या बताओ अभी? हाँ, संक का कौन सा LX है? Who is LX in the sunk? total is 1.2। Yes, this one, half इसका half ना। Let's So assume LX this, will be हाँ LX will be Total is 1.2। कौन सा 1.2 बोल रहे? ये 1170। हाँ वही करेक्ट,
इसको मैं 1.2 मीटर बोलता हूँ। चलिए सर एलेक्स शॉर्टर स्पान ही रहेगा किसी कैलकुलेशन में? हाँ, शॉर्टर ऑलवेज, एलेक्स इज शॉर्टर, ओके ऑलवेज एलेक्स इज शॉर्टर, वन वे में शॉर्टर ही लेना ही है। तो ये रहेगा मेरा 1.2 डिवाइडेड बाय 2, सो इट विल बी 7.88, राइट ना? राइट सर। राउंड कर रहा हूँ, जस्ट रिमेम्बर। S1 S2 8 ये हुआ, और क्या है इसमें बाद में? ये है सेल्फ वेट तो पता है आपको 3 किलोन्यूटन पर मीटर, एंड वॉल लोड भी पता है आपको 9 किलोन्यूटन। तो टोटल विल बी, समेशन करता हूँ यहाँ ही, 26.5, 27. okay, so this is nothing but 27 kilonewton per meter. स्पैन कितना है? लेट्स चेक इट आउट। आई थिंक 2.2 है ना? नहीं, 2.8, 2.9 B6 का स्पैन। सो दिस इज 2.9। नाउ ये B6 किस पे रेस्ट हो रहा है? B6 is resting on B21, B21 B23 21, 23. So B21, B23. ये this is easy, WLX by 2. So, but ये W मतलब ये 27 है ना? 27 divided by plus 2.9 divided by 2. 3 divided by कितना आएगा ये? 5. रफली क्या आ रहा है नंबर बता रहा हूँ। 41. थोड़ा लोअर लेता हूँ राउंड फिगर, 40 किलोमीटर। ओके, जनरली नहीं लेते, बट हम ऑलरेडी हायर ले रहे हैं कहीं कहीं, तो कभी लोअर लिया तो भी चलेगा, नो इशू। 41 का 40 इज नॉट अ बिग नंबर। ओके, ये 40 किलोमीटर ये राउंड अप करते, बट एज वी आर राउंडिंग अप, इट शुड नॉट हैपन दैट राउंडिंग अप इज गोइंग टू मच हाई। मतलब इतना भी नहीं होना चाहिए, थोड़ा थोड़ा ठीक है, 1 किलोन्यूटन इधर उधर चलता है। 40 किलो न्यूटन हियर। नाउ यू गॉट दिस नंबर्स। ये B21 का पॉइंट लोड चाहिए था हमें। B21 का कितना आया? 40, तो लिखेंगे उधर। आयो B21 लिखा है क्या? सॉरी B6 is resting on 21 and 23। 23 पे है 40, 23 हाँ यहाँ है, ये है 40 किलोमीटर जो मिसिंग था ना पहले। और 21 पे 40 आएगा, 21 यहाँ B6 लिखा था मैंने। Got it? 13 का भी उतना ही आएगा ना? ये 13 और 6 सेम ही है ना? राइट सर। तो वो भी 40 आएगा यहाँ। सिमेट्री रहेगा तो बहुत आसान है काम। नाउ हमें B1 सॉल्व हो रहा है, B2 सॉल्व हो रहा है। हाँ, अभी B23 भी चाहिए ना मुझे, अदरवाइज हाउ इट इज मिसिंग ना। B1 पे B23 मिसिंग हो रहा है क्या? यस सर। ओ सॉरी, ये B23 का नहीं है, सॉरी ये रॉन्ग है। यहाँ 23 का निकाला ही नहीं ना हमने, ये 6 का है। 6 का सिर्फ यहाँ निकाला है मैंने, 21 यहाँ। तो B21 अभी B23 का निकालना है, राइट। B23 22 निकालेंगे, 22 23। In the beginning you may find it little tricky, but इससे भी शॉर्टकट्स है, मैं बताऊंगा बाद में। बट बिफोर शॉर्टकट थोड़ा सा काम करना पड़ेगा इस पे। ओके, नाउ B23 22 23 22 23 B22 .
13.6 B6 का तो हमें पता है 40 किलो न्यूटन आया है मेरा. Okay, so B23 2 is resting on B15 B8. This is resting on B15 B8. ये भी B8 है और ये B1 है. समझ में आ रहा है? 22 किस पे रेस्ट है? 15 और 8 पे, और 23 8 और B1 पे. See this. B23 is on B8 and B1. So they will transfer the point loads. यहाँ ये B8 पे जाने वाले लोड. So how to calculate the load on B23? S1 और S3 का सर ट्रापेजॉइडल लोड आएगा सर. S1 और S3 का ट्रेपेजॉइडल यहाँ देखो जी. ऑलरेडी निकाला है, फिर से काम नहीं करना है हमें उस पे. S1 S3 तो यहाँ लिखता हूं मैं S1 और S3 का. सो दीज आर नथिंग बट ये S1 S3 लोड, बाद में सेल्फ वॉल, ये है ना टोटल लोड्स. यस. S1 से कितना निकाला था मैंने? S1 ट्रेपेजॉइडल ना 6.5, यस सर. और वो भी वो नहीं, वो ज्यादा रहेगा ना, वो ज्यादा है. वो ज्यादा रहेगा. ये 6.5 है ट्रेपेजॉइडल ना, ट्रेपेजॉइडल. S3 का निकालना पड़ेगा क्या? हाँ ये निकालना पड़ेगा बिकॉज द स्पैन इज मोर. सी दिस. यस. सो Ly by Lx निकालना पड़ेगा, तो S3 का निकालेंगे. Ly कितना है? 4.3. यहाँ देखो इतना ही है ना ये हाइट. यस सर. 4.3 है. एक काम करता हूँ, एंड 2.2 है. यहाँ ही निकालता हूँ. S3 का फॉर्मूला है WLX by 2. S3 ट्रेपेजॉइडल into 1 minus 1 upon 3 बीटा स्क्वायर. सो बीटा निकालना पड़ेगा. बीटा इज Ly by Lx. Ly is 4.3 divided by Lx is 2.2. 2.2. तो ये कितना आ रहा है? Approx 2. 2. Less than 2. 1.95. ओके 2 लिखता हूं मैं यार राउंड. तो बीटा इज 2. So if 6.5 is the load, Lx is 2.2 shorter span divided by 2, 1 minus 1 upon 3 into 2 square. बताओ क्या नंबर आ रहा है? ये भी 6.5 है. 6.578. 7 किलो न्यूटन पर मीटर. ओके 7. 6.5, then it is 7, self-weight is 3, wall load is 9. Total is 25.2 to 26. 26 kilonewton meter. Okay. 26 kilonewton per meter is this load. Again, same for this person. And B13. Okay, 23 का ये तो निकाला ना. B13 का निकाला क्या मैंने? B13 मतलब ये B6 वाला. ओके ये लोड निकाला मैंने. नाउ टेल मी, B6 का लोड तो ऑलरेडी लिखा है. नाउ व्हाट इज मिसिंग? नाउ लेट्स स्टार्ट अगेन. B12 पे हमारा कुछ तो मिसिंग था. हु वाज मिसिंग? B23 इज मिसिंग. ये पॉइंट लोड B23 से कैसे आ रहा है बताओ. नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट द लोड पाथ. लोड पाथ कैसे है? B1 पे लोड, सी B23 पे लोड कहां से जा रहा है? B6 से. सी दिस.
और B23 का लोड जा रहा है B1 पे। यहाँ समझ में आ रहा है सभी को? यस सर। सो इफ यू कैलकुलेट द B23 का लोडिंग डायग्राम सॉल्व करने के बाद आपको रिएक्शन मिलेगा यहाँ। सो B23 का लोडिंग डायग्राम ऑलरेडी निकाला है मैंने। तो 23 का लोडिंग डायग्राम निकालो और ये B1 का रिएक्शन निकालो। सो दैट्स व्हाई वी हैव रिटर्न द, ये देखो ये B23 का डायग्राम है। अभी B23 के डायग्राम के लिए B6 का रिएक्शन चाहिए था हमें, इसलिए मैंने पहले B6 सॉल्व किया पहले, so that I got this B23 40 किलो न्यूटन। 40। नाउ अभी ये रिएक्शंस कैसे निकलते हैं, अभी ये स्पैन हमें पता चाहिए। ये स्पैन कितना है 23 वाला, थ्री 1.2 ये मैं 3.2 या 3 बोलो इसको, चलेगा कुछ भी। 3.2 1.2 ओके। 4.3। ये है 3.2, ये है 1.2 ओके। टोटल इज नाउ रिएक्शन कैसे निकलते पता है आपको? यस सर। यस सर। Yes, sir. सो यू कैन बताओ। सर ये तो सपोज आसान इन B8 सर 40 into 3.2 upon 4.4। सो अभी ये Longer B8 है is ना, B8 का निकलता हूँ यहाँ। B8 के लिए रिएक्शन जो रहेगा ना वो रहेगा WL/2 ओके। Plus ये रहेगा आपका UDL से, WP, और पॉइंट लोड का रहेगा, क्या रहता है फॉर्मूला? WB W divided by L. into B. फॉर्मूला से निकलेंगे या Divided by फंडामेंटल से निकलेंगे? फॉर्मूला मेरे ध्यान में नहीं रहते सभी। ओके सो आई डू, WB divided by L. ऐसे भी कर सकते हैं रिएक्शंस। WB इंटू डिवाइड बाई एल ना? हाँ, यस सर। वही। तो Yes, ये sir. रहेगा Yes, sir. WL/2 LX/2 और ये रहेगा PB/L। B मतलब अदर, ये साइड। तो ये रहेगा 26 इंटू 4.4 डिवाइडेड बाय 2 प्लस पॉइंट लोड है 40 इंटू B इज 3.2 डिवाइडेड 4.4 ओके। ये क्या नंबर आ रहा है बताओ? B8 का रिएक्शन है ये। बावन 80 90 क्या रहे? 86। 86। 86 किलो न्यूटन। सो दिस इज योर 86 किलो न्यूटन B8 पे, और B1 पे भी सेम नहीं, B1 पे अलग रहेगा ओके। B1 पे ये PB नहीं रहेगा, PA रहेगा ये। तो B1 पे जो रहेगा वो है, ये तो सेम आएगा 26 इंटू 4.4 डिवाइड बाई 2 प्लस ये रहेगा 40 इंटू 1.2 डिवाइड बाई 4। कम आएगा ना रिएक्शन उसमें? बताओ फिर से नंबर। सिक्सटी एट 67 point something 68। 68 किलो न्यूटन B1 पे आ रहा है। तो वो B1 का जो रिएक्शन था यहाँ है 68 ओके। सो ऑल लोडिंग डायग्राम्स आर रेडी विथ ऑल द नंबर्स, पॉइंट लोड वगैरह सब निकला मैंने। नाउ इफ आई आस्क यू टू कैलकुलेट द लोड ऑफ कॉलम 1, फर्स्ट फ्लोर से कितना लोड जा रहा है? सो लोड ऑन C1 पे लोड कौन कौन से है? अभी फिर से जाएंगे वो प्लान पे। A1 B21। सो एक मिनट, B1 से जा रहा है, दिख रहा है ना? ये कुछ तो रिएक्शन जो जा रहा है ना B1 पे,
B1 से Yes. then B21 से जा रहा है कुछ तो रिएक्शन, we have already calculated that. और सेल्फ वेट, राइट. Yes, sir. B1 रिएक्शन, B21 रिएक्शन, मतलब शेयर बोलते हैं, शेयर या रिएक्शन कुछ भी बोलो, और सेल्फ वेट. सो B1 का रिएक्शन C1 पे कितना है देखना पड़ेगा. B1 का रिएक्शन C1 पे, हाँ वो निकालना पड़ेगा, राइट. सेम फॉर्मूला, ये अभी कैलकुलेट करना पड़ेगा आपको. सो वही फॉर्मूला PBA/L क्या था, WLX/2, ये कितना है 5.1, ये टोटल एल निकल सकता है डायरेक्टली, कोई लिखो डायरेक्ट. 18 इंटू 5.1 डिवाइडेड बाय 2 प्लस पॉइंट लोड 68 इंटू बी ना 2.2 डिवाइडेड बाय, सही है ना फॉर्मूला. Yes, sir. क्या नंबर है ये. सेवेंटी 5.33 C1 पर. 75 75. 75 किलो न्यूटन. ओके, C1 पे आया है फ्रॉम B1 से, और कहाँ से आ रहा है उस पे, B21 से आ रहा है, मतलब B21 भी सॉल्व करना पड़ेगा. तो आई थिंक वी हैव सॉल्व दैट ना. नहीं, B21 को सॉल्व किया है क्या? नहीं किया, नहीं, यहाँ है B21 मेरा. Yeah. सो अगेन B21 पे ये राइट साइड सॉल्व करेंगे. C1 है ना हमारा एक्सपेक्टेशन ना, W length. x/2 मतलब, हाँ वो डायरेक्टली करेंगे. चलो 18 इंटू, अभी स्पैन किया है ये, 21 का स्पैन, 3.2, 1.2, 4.4. 2, 3. B, yes, sir. 3.2 मतलब टोटल है ये 4.4 टोटल. plus सो अभी ये 18 इंटू 4.4 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 40 इंटू 1.2 डिवाइडेड बाय 4, क्या रहा है ये C1 का रिएक्शन. 50.5, 50 किलो न्यूटन. ओके, ये Yes. 50 लिखता हूँ यार. फाइन, अभी ये लेट मी हाईलाइट दिस. ये B21, यहाँ C1 है मेरा. C1 यहाँ एक है और B1 पे रहा है वैसे. B1 पे यहाँ C1 पे 75 है. सो लोड ऑन C1, एक ही कॉलम करेंगे, बाकी तो फिलोसॉफी सेम. सो लोड ऑन B, ये B1 से एक लोड है इस पे. B क्या था वो 21. 21 है ना. 21 से एक लोड आ रहा है, बाद में कॉलम का सेल्फ वेट है. बाकी वॉल लोड वगैरह सब 25. हाँ Yes, sir. हाँ 1 और 21 है क्या, देखो फिर से. हाँ 1, 21 देन सेल्फ वेट, इतना ही है. सो B1 का है 75 प्लस 50 था ना. 50. Yes, sir. 75 प्लस 50, ये 75, ये 50 और सेल्फ वेट 10 था मेरे ख्याल से, राइट, किलो न्यूटन. Got it? Yes, sir. Now this is from first floor. First floor मतलब 1, 3, 5 odd floors है ना वो सभी के. Now you can similarly calculate for the
तो ये C1 का निकला, वैसे C2 के लिए और बाकी भी निकाल सकते हैं ना आप. Similar method. Yes. Method is same. So that means you should know the loads of the slabs, walls, beams, floor finish, everything. Once you know the loads, draw the loading diagrams like this. Show the supports here. C1, C2 कौन है. Then point load beam का रहेगा तो just write it down and solve all the beams and you will get the reactions of the columns. Okay. Once you get the reactions of the columns, sum all the reactions and you will get the column loads. And similarly for the other floors also you can do. अभी ये हमारा था first floor, then you can go for second floor. अभी second floor पे दिख रहा है क्या? This is your second floor and this is your plan. Now can you tell me what additional load is coming on C1? अभी C1 का ये second floor है. तो यहाँ कौन सा लोड ऐड होगा इसमें? क्या होगा ऐड इसमें? CB1 दिख रहा है यहाँ. CB1. CB1 का जो रिएक्शन है, ये कैंटिलीवर है इसलिए पूरा लोड पीछे जाने वाला है. B1 को ऑलरेडी निकाला आपने, बट B1 में डोंट फॉरगेट यूडीएल चेंज होने वाला है B1 का. B1 पे एडिशनल कौन सा लोड है बताओ? Slab 6. स्लैब S6 का ये हाफ लोड जाने वाला है. सो एंड स्लैब 6 क्या है? ये बालकनी का है. तो आपको S6 का लोड निकालना है. सो बालकनी वी आर हैविंग संक ऑफ 150 mm. पता है क्या सभी को? Yes, 150 mm का बालकनी का संक लोड रहता है. तो यू नीड टू ऐड दैट संक. सिमिलर टू टॉयलेट. टॉयलेट में 3.1 या 3.25 था कुछ, तो इसका सिर्फ 150 है. बाकी तो ब्रिक बैट, फ्लोर फिनिश, एवरीथिंग विल बी सेम. सो आई कैन शो यू दैट बालकनी लोड विल बी, दिखाता हूं मैं कितना आएगा. वाटरप्रूफिंग. See this. कहाँ गए? Attached terrace sunk. Yeah, see this. Floor finish to 1.5. There is no problem. Sunk is 150 for balcony area because for waterproofing. So 0.15 into 20, 3 kilometers. So 3 will be additional to the floor finish due to sunk. So 4.5 will be the sunk load of the terrace or balcony, we can say. So that UDL you need to transfer. WLX by 2. Additionally B1 पे जो है पहले हमने निकाला उसमें ये सिर्फ ऐड करना है आपको. Then that will be B1 UDL additional and CB1 का point load ये NB1 का यहाँ transfer करने के बाद यहाँ आएगा. So there will be additional load of the second floor पे रहेगा उस पे. So for example I can say कि ये हमारा अभी कितना है? 135 है ना? 135 column load है ना हमारा अभी? Yes, sir. Now through this can you judge कि उसका लोड कितना आएगा उस पे? बताओ. Will there be load of 100 kilonewton ऐड होगा second floor का column का C1 का? आपको क्या लग रहा है? 100 इज द गुड नंबर? बहुत ज्यादा होगा ना. ये 135 कैसे आया हमारा? B1 21 सल्फेट सबका है. कैन यू टेल मी एज पर योर जजमेंट कितना नंबर आएगा? अगर ये हम अभी तो कैलकुलेशन मैंने किया नहीं है, फिर भी आपको क्या लग रहा है? इफ यू ऐड दिस लोड ऑफ दिस बालकनी संक स्लैब एंड ऑल, ये सब यहाँ भी वॉल रहेगी, पैरापेट वॉल रहेगी, कितना ऐड होगा आपको लग रहा है? 135 के जगह कितना आएगा सेकंड फ्लोर का लोड? It will be more than 135. हाँ, मोर देन 135 ये तो है, दैट इज फॉर श्योर, क्योंकि ये लोड तो आने वाला है एडिशनल. आपके दिमाग में क्या जजमेंट नंबर है ऐसे बोलो? 140. ओके सो No, sir. Approx like 40 to 50 extra, like 175 around. 175. Okay, not bad number. Abhi see, this judgment you will get as you do this exercise completely, yeah. And if you do such kind of exercise 2-3 times for different projects, then you will get that feeling कि यार ये इसमें एक 25-40 ऐड हो जाएगा. Not bad. 75 is also not bad. I'm not saying it is really correct. You need to verify it. But Yes, sir. now you have a judgment of the column loads. अभी एक बताता हूँ, ये 135 फर्स्ट फ्लोर पे ही जाएंगे. Now look at the plan. यहाँ 135 है मेरा अभी C1 पे. I'm just developing the thought process in you. Can you tell me C2 पे कितना रहेगा? अप्रोक्सीमेटली चल रहा है, बहुत ही अप्रोक्सीमेट कर रहा हूं मैं. लोडिंग डायग्राम निकालने के बाद आपके पास है, अभी मैंने निकाला वो, फिर भी कितना लग रहा है?
So more than C1. ये सी मोर देन मतलब नंबर्स आपको अराइव करना होगा तो अप्रोक्सीमेटली नंबर भी अराइव करना आना चाहिए. Number right, sir. I अभी would मैं say, बताता हूँ. 200. sir, हाँ, around नहीं 200. नहीं सी ओके. अभी उसके लिए भी कुछ तो बेसिक्स करो. आई एम सेइंग से जनरली कैसे रहता है बताता हूँ. इफ यू लुक एट द से C4 और C1 सेम है इसलिए मैं ये साइड क्यों करता हूँ. जनरली roughly I'm saying you can divide this area in 4 parts. Okay, ये 4 कॉलम्स है ना, ये इसको भी 4 पार्ट्स में ऐसे डिवाइड करना रफली. एंड Yes, देन sir. इफ यू सी देन दिस एरिया ये दिख रहा है इतना, ये लोड जा रहा है C4 पे. ओके, देन इफ आई ड्रॉ द रेड कलर, ये जो रेड कलर का ये जो जोन है ये जा रहा है C3 पे. देन अगेन दिस pink color from this side and pink color from this side is going on C10, right? Then if you see the C9, अभी ये इस पे कितना जा रहा है C16 पे, अगेन सेम C4 की तरह क्वार्टर पोर्शन. एंड इफ आई आस्क यू यहाँ कितना जा रहा है, तो ये पूरा है यहाँ, मतलब आई वुड से इट इज समथिंग Yes, sir. समथिंग ये पूरा यहाँ, ये क्वार्टर जोन, ये क्वार्टर जोन है, ये क्वार्टर जोन. ओके, so that means I can say C4 is carrying only 1/4 of the load. Okay, Right. 1/4. So 1/4 is nothing but 135 हमारा अभी. तो ये कितना जा रहा है ओके C3 निकाला नहीं मैंने, C3 पे हाफ जा रहा है. ये half है, double of. ये है ना Yes, ये. sir. सो इसका डबल रहेगा, रफली Twice चल रहा of है C. इसलिए मैं बोल रहा हूँ, मतलब नंबर आना Yes, है ना. sir. तो ये मेरा 135 रहेगा, तो ये मेरा रहेगा 270. 270. और ये C9 कितना रहेगा, ये बहुत रहेगा ना, ये उससे डबल रहेगा 4 C9 4 times. 540 हाँ अप्रोक्सीमेटली चल रहा है, या 500 to 540 समथिंग. ओके, देन अगेन C10 भी लगभग, अभी ये संक लोड की वजह से ये C10 विल बी मोर. यस और नो, संक का लोड ज्यादा है ना, Yes, sir. सो ये डबल से थोड़ा ज्यादा होगा डेफिनेटली. 135 का डबल कितना है, 270 है ना. Around 300 बोलो, 290 to 300. 300 बोलता हूं मैं राउंड फिगर. अभी यहाँ संक नहीं है इसलिए 270 इज वैलिड. एक्चुअली सिमेट्रिक है इसलिए नो प्रॉब्लम. ये Yes, 540 sir. आ रहा है. 540 में भी यहाँ लेफ्ट साइड से कम लोड आ रहा है, राइट साइड से संक की वजह से ज्यादा आ रहा है. यस और नो. Yes, sir. सो आई कैन थिंक ऑफ 550 570 भी बोल सकता हूँ इसको, या मतलब जस्ट हैव दिस नंबर. मेरा ट्राई टू अंडरस्टैंड मैं ये क्यों पूछ रहा हूँ. नाउ इफ यू लुक एट द प्लान, once you get one number, a judgmental number, then you can look at the plan and just have a feeling कि यार ये 300 तक आएगा, ये 200 तक आएगा, 150 आएगा, 135, 400, 500, and get that feel of the loadings. Okay, and once you know this is 135, let's say I can say this 150 also for my round numbering system. So from first floor 135, from second floor 175 बोला था ना आपने. ओके, Yes, sir. अभी कितने फ्लोर्स है हमारे यहाँ, अभी यहाँ नीचे जाता हूँ. Total 5. C1 का चल रहा है हमारा फर्स्ट फ्लोर, सेकेंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, फोर्थ फ्लोर, टेरेस है के बाद में फिफ्थ है. जस्ट लेट मी चेक. And traffic parking. 1 अभी हाँ यहाँ एक देखो लोड कहाँ से कहाँ जा रहा है, ये आपको दिमाग में आना चाहिए, नहीं तो कैलकुलेशन नहीं हो जाए. सो ऑन फर्स्ट फ्लोर जो हमने निकाला था, स्लैब लोड फर्स्ट फ्लोर जो निकाला है मैंने, वो कहाँ जा रहा है, ये कॉलम पे जा रहा है. ओके, दिस फर्स्ट फ्लोर जो कैलकुलेशन किया मैंने, ये यहाँ जा रहा है लोड, इन दिस कॉलम, नीचे वाला कॉलम. Yes. सेकेंड फ्लोर का कैलकुलेशन जो निकालूंगा वो उस पे जाएगा, इस पे. थर्ड का इस पे, फोर्थ का इस पे, फिफ्थ का इस पे, और टेरेस का इस पे. ओके, सो सेकेंड फ्लोर के लोड कितने हैं टिपिकल, ये मेरा टिपिकल है, टिपिकल, ये फोर्थ भी टिपिकल है. अभी ये टेरेस भी मैं टिपिकल बोलता हूँ, और समझो देयर इज एक्सटेंशन इन फ्यूचर. तो whenever you calculate the loads on the structure,
So assume typical one means- extension. Typical means Second and fourth are same. okay. क्योंकि देखो ना ये बालकनी है ना सेकंड पे, Yes. सेकंड फोर्थ दे आर हैविंग Yes. बालकनी एंड फर्स्ट फ्लोर इज नॉट हैविंग बालकनी, ये वाला। Right. Sir. सो इसकी वजह से हमारा जो लोडिंग कैलकुलेशंस है, फर्स्ट फ्लोर, हाँ फ्लोर है ये। पार्किंग भी था एक्चुअली, यहाँ मैं पार्किंग C1 का कैलकुलेशन कर रहे हैं। पार्किंग से कितना आ रहा था, बहुत ही कम था ना वो, $25 कॉलम लोड ऑफ पार्किंग। वो सिर्फ कैलकुलेशन पार्किंग से 25 है किलोन्यूटन, फर्स्ट फ्लोर से 135 है, 135. सेकंड फ्लोर से अभी सम अज्यूम करो 175 बालकनी ऐड कर, ये 135, ये 175, ये टेरेस का और कम हो जाएगा सर। हाँ वो अगर सी इन दिस केस यू कैन अज्यूम, जनरली मैं क्या वो करता हूँ, टेरेस का भी फुल लोड लेता हूँ, बिकॉज मेनी टाइम्स क्लाइंट्स एक्सटेंड द फ्लोर, दे गेट द FSI और दे वांट टू डू द कंस्ट्रक्शन आफ्टर इन फ्यूचर, सो इट इज ऑलवेज बेटर टू हैव वन प्रोविजन एडिशनल। मतलब कभी भी काम करते समय एक प्रोविजन कंपलसरी रखो, बाद में नहीं तो क्लाइंट आपको बताएगा आपने डिजाइन नहीं किया, तो ही विल से कि यू मेक इट श्योर कि बैठेगा, बेटर वे डू इट। 135. अभी ये लोड पाथ सिर्फ देखो ये हमारा फ्लोर्स कैसे हैं, नहीं तो ये Plus 3 4 1 4 यहाँ प्लिंथ है, यहाँ फुटिंग है। the total load coming in 780. कहाँ आ रहा है बताओ इस लेवल में? अभी ये फाउंडेशन लेवल है, पार्किंग कौन सी लेवल पे ये लोड आ रहा है बताओ? At the parking. फाउंडेशन At the Yeah, joint yeah. of yes. At the joint of parking, if you want to calculate the load of the column at this level, फाउंडेशन लेवल पे, तो क्या ऐड होगा इसमें? Just the height of the column. मतलब कॉलम वेट Column weight, self weight of column. कितना है वो? 25 into 10 10. किलोन्यूटन है ना, 10 तो ये into मेरा 790 रहेगा किलोन्यूटन इस लेवल पे। पार्किंग लेवल पे Sir, 780 the height, किलोन्यूटन। it will depend on the height also, no? The 3 parking मीटर to- पकड़ो, 3 Yes, मीटर sir. पकड़ो, Yes. सब 3 मीटर अज्यूम कर रहा हूं मैं। Yes, yes. If the dimension changes, then definitely there will be change in load. Yeah, yeah. पार्किंग लेवल पे 780, 780. फर्स्ट फ्लोर पे Minus 135. नो -25 ना। Minus 25, sorry. अभी सी आप कहाँ से क्या निकल रहे हैं उसके ऊपर है ये। अभी ये सिर्फ इतना ही है ना, पार्किंग लेवल का कितना माइनस हो रहा है उतना ही Yes, होगा ना। sir. Yes, yes. तो Sir. कितना आएगा ये 695 755. सॉरी From yes, 765, sir. From 780, sir, 755. 755। ये सेकंड फ्लोर पे Minus 135. 620. सो ये माइनस कर रहे हैं, ये हर एक लेवल पे ऊपर जाने के बाद ये कर रहे हैं। आइदर यू कैन ट्रांसफर फ्रॉम बॉटम टू टॉप जा सकते हैं या टॉप टू बॉटम भी जा सकते हैं। यू कैन से 445. ऐसे भी कलेक्ट कर सकते Yes, हैं। टेरेस पे अभी एक टिपिकल Yes. फ्लोर लिया मैंने 135। चलो कभी Yes. कभी ये आसान जाता है सभी को, लेट्स फॉरगेट दिस, ये जाने दो, ऊपर से नीचे आएंगे। 135 टेरेस का मतलब यहाँ भी कुछ है ऐसे दिख रहा है। फोर्थ पे 175। 125. अभी 135. एक्यूमुलेशन करना है आपको। Yeah. ओके सो एक काम करेंगे, यहाँ मैं लिखता हूँ सभी लोड्स 135, 175, 135, 25 एंड 10। हाँ ये मेरा देन क्यूमुलेटिव निकालना है अभी। सो क्यूमुलेटिव विल बी एट दिस पॉइंट, इट विल बी 175 175. 3110. 310. 135 आएगा ना, यहाँ 135 आएगा एक्चुअली यहाँ, राइट। ये सिर्फ ऊपर वाला लोड यहाँ अभी कहाँ निकाल रहा है, यहाँ लेवल पे निकाल रहा है, ये नीचे लेवल पे, दैट इज अप टू यू, यू शुड डिसाइड दैट। ये कॉलम का अगर कंसिडरेशन कर रहे हैं ऊपर वाला तो 135 ही रहेगा। सो
सी दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि कहाँ से क्या चल रहा है. बाद में क्या होता है, कैलकुलेशन सही करते हैं हम, लेकिन किस लेवल पे क्या सोच रहे हैं. इफ यू आर इंटरेस्टेड इन दिस कॉलम डिजाइन, ये ऊपर वाला, तो इस पे कितना आएगा, 175 ऐड होगा क्या एक कॉलम में इसमें? No, No. sir. No, नो, sir. ये फ्लोर यहां से ट्रांसफर कर रहे हैं. तो फॉर दिस कॉलम 135, Yes, sir. फॉर दिस कॉलम 135 प्लस 175, ये वाला. सो ऐसे Yes. बीच में लिखता हूं, मतलब किसके लिए क्या लोड निकल रहे हैं वो नहीं. सो ये रहेगा 310. 310 किलो न्यूटन. ये कॉलम के लिए 310 प्लस 135 445. 445. ये कॉलम के लिए प्लस 175 620. 620. ये 135 प्लस 755. 75 780. 780. और ये कॉलम का वेट भी ले लो 790. ओके, सो दीज आर द नंबर्स. नाउ लुक एट द, so this way you can come to the numbers, and now these numbers also generally to get my feeling to ये 25, 135, 150, 175, 200. So you can see this C1 is carrying 780 kilonewton load. Okay, now you can round it 800. बाद में क्या है, see once you do this practice and look at the numbers slowly for as you do different projects, and you do this exercise. See, this is exercise important to get the experience. Software is not helping you to get the experience. अभी मैंने यहाँ दिखाया ना, ये इससे experience develop होगा. And if you do 2-3 projects like this, you will get a feel कि प्लान देखने के बाद भी आपको समझ में आएगा कि इस पे 200 आएगा, इस पे 150, 300, 300, 450, 500, 1000, like these numbers. So you will get that feeling of the numbers. And then you can check the results of the software very effectively. कॉलम सामने देख के आपको समझ में आएगा इस पे लोड सही है गलत है. समझ में आ रहा है? So the Yes, main sir. important point regarding today's session is you should develop your experience and feeling through this kind of exercise. STAAD ETABS will give you directly the answer, and that will not help you to become good engineer. Okay, so that's why parallelly you should do such kind of exercise. Always till your number is, अगर प्लान को देख के अगर आप डायरेक्टली नंबर बता सकते हैं, इसको देखा 500 के लगभग नंबर आएगा SC6 का, इसको देखा 300 तक आएगा. सो दैट फीलिंग जब तक आपके इंट्यूशन लेवल पे ट्रांसफर नहीं हो रहा है, तब तक ये एक्सरसाइज होना ही चाहिए. ओके, so that is the today's aim of the session. Those who are finding difficulty in this one-way, two-way, and load calculations, you refer my previous video workshop. Okay. I hope all of you got the benefit of this. Any questions? So, sir, after knowing the total load, sir, we can have the design of column then with the Yeah, we formula. can have the design column. Finally, we design through the software results, Yeah. but still you can design this. हाँ, मतलब you can design this and you can get a feel कि 800 kilonewton के लिए क्या column size आएगा, और Yes, क्या sir. steel आएगा. So Yes, that sir. you can check the design also. ना software का design भी आपके हाथ में आएगा कि हाँ Yes, ठीक है, this comes okay, this is okay or not okay, whatever. You can get the judgment कि अरे आ रहा है सही या नहीं आ रहा है. There are many hidden approximations involved in this that can be discussed later. But to begin with, this is a really good strategy. Yes, sir. Simple is always better. Complications में नहीं समझ में आता दिमाग में, experience नहीं develop होता complication में. ये Yes, sir. अभी if you look at the numbers, ये 70 तक है, ये 40 आ रहा है reaction, ये 135 आ रहा है, 200 आ रहा है. So see, experience comes through the numbers which you can remember. Okay. स्ट्रक्चर्स में इतने सारे नंबर से अगर ये नहीं होता ना, अभी ये पॉइंट में मैंने डिजिट लिए रहते ना, तो देयर वुड नॉट बी एनी फीलिंग ऑफ द नंबर्स. Yes, sir. 0.9 को मैं 3 क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि 3 इज वेरी कनेक्टिंग टू मी. 3 मतलब 10 फीट. एंड जस्ट लुक एट द प्लान. हाँ, 5 मतलब 15 फीट है, ये 10 फीट है, 8 फीट है, ये 3 फीट है, या मतलब 1 मीटर है, 3 मीटर है, 4 मीटर है, 5 मीटर. एंड आई कैन गेट अ गुड फीलिंग ऑफ द नंबर्स ना. और सी नाउ इफ यू आस्क मी इस पे कितना लोड आ रहा है, प्लेन बीम पे जाएंगे. चलो
थोड़ा आसान. Clean beam पे मैंने, if I ask you, now you know the load on the beam, 3 kilonewton per meter. Now if I ask you, C6 पे कितना लोड आएगा पार्किंग का, बताओ. पर मीटर कितना लोड है बीम का? 3 है. नाउ ये हाफ जा रहा है, मतलब ये 4.2 डिवाइड बाय 2 मतलब 2.1, ये 2.1, 4.2 और ये 5 और 3 8 मतलब 4 और 4 8, 8.4 लगभग आ रहा है. 8.2, 8 into 3 24 मतलब 25. फाइन, यू आर कमिंग टू द नंबर 25. मैंने विदाउट कैलकुलेटर आई जस्ट केम टू अ नंबर 25 Yes. के आसपास नंबर आएगा ये. तो दैट इज द अप्रोक्सीमेट एनालिसिस. ओके, और ये सब मैं दिमाग में कर रहा हूं. एंड दिस हैबिट विल हेल्प यू टू डेवलप द अंडरस्टैंडिंग. मतलब कैलकुलेटर पे अगर कैलकुलेशन किया ना, आई एम नॉट सेइंग कैलकुलेटर पे तो करना ही पड़ेगा क्योंकि एक्यूरेटली वो देगा, बट मेरा जजमेंट कौन सिखाएगा मुझे? मतलब डेवलप कैसे होगा? हाउ कैन आई डेवलप द अंडरस्टैंडिंग? थ्रू माई मेथड्स, थ्रू माई टेक्निक्स, थ्रू माई प्रैक्टिस, वॉट एवर. So ये 25 ऐसे आ रहा है ना, just look at the number 2.5 plus 2, 4.5 into 3, 12, 14, come to that number. जैसे ही स्लैब पे ही, स्लैब पे आपके पास लोडिंग प्लान है. अभी तो डायरेक्टली मैंने वो कंट्रीब्यूशन दिखाया, क्वार्टर, 1/4, 1/2. वो भी नहीं रहेगा तो सिर्फ ये ऐसे इतना क्वार्टर लेना है आपको, स्लैब का लोड निकालना है आपको, बीम का लोड निकालना है. वैसे भी निकलते हैं, वो थोड़ा ज्यादा ही अप्रोक्सीमेट है, इसलिए मैंने आज नहीं लिया, बहुत ही अप्रोक्सीमेट है. ये इतना ही आपको अगर C3 पे लोड निकालना है तो ये स्लैब एरिया इनटू पर स्क्वायर मीटर लोड. देन ये समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूँ? ये दिस इज द स्लैब, नॉट एक्चुअली यू शुड टेक लिटिल हाई राइट साइड, या थोड़ा राइट को जाना है आपको. दिस इज द स्लैब लोड टोटल. स्लैब लोड कैसे निकालेंगे? दिस width into length, then there is a wall load, beam self weight. ये इतना length और इतना length, so length into per meter जो लोड है हमारा, 3 for the self weight, 9 for the wall, 12 into this length, 12 into this length, मतलब ये तीनों बीम्स का हुआ मेरा लोड. and slab into area, खत्म. my load of the C3 is there quickly within 2 minutes. Even looking at the numbers, I can come to this number. ये कितना है? 4.2, मतलब half is 2.1. पहले 2 ही लेता हूं मैं, बाद में राउंड करता हूं. 2 और ये हुआ 5, 3, 8, 4. 4 into 2, 16 और स्लैब का लोड रहेगा लगभग 6, 100 मतलब स्लैब लोड इज 100 एंड बीम का कितना आएगा? 4 and 2, 6 into 3, 18. 9, 12 है हमारा ये. 9 12 हाँ, 12 into तो वॉल का था सर 4 plus 2, 6. 6 plus 2, 8 into 12, 100. 100 from slab, 100 from column, 200. 200 ही था ना? 200 हमारा कितना आया अभी? 270. ठीक है, मतलब नॉट बैड. अभी यहाँ पॉइंट लोड वगैरह हमने इतना नहीं आसान से निकाला ना. देन यू कैन डेवलप दिस जजमेंट आल्सो कि अगर पॉइंट लोड रहेगा तो कितना बढ़ेगा, तो यू कैन इंक्रीज इट. सो आई गॉट दैट नंबर एज अ 200, नॉट फार अवे बट स्टिल दिस पॉइंट लोड 25 डाल दो उसमें, 25-50. सो सी, यहाँ तो मैंने कुछ भी किया नहीं ना कैलकुलेशन, फिर भी 270 के पास आया हूं मैं. 200 इज नॉट बैड नंबर फॉर मी एज ऑफ नाउ. इफ आई डेवलप दिस पॉइंट लोड एबिलिटी आल्सो टू एड द फैक्टर टू दैट, then I can reach to that 250 level तक तो जा सकता हूँ. I generally go that, but I'm not saying that. You develop your that practice or judgment. Okay. So this is the overall aim of today's session. So thank you all. Thank you so much, sir. Thank you, sir. Good Good night. night. Thank you, sir. Yes, thank you.